कार्यक्रम रुक गए थे। उत्सव समारोह की अनुपस्थिति में अनुस्मृति होती थी, प्रचार और ग्रंथों का वितरण भी बहुत न्यूनतम हुआ। और सबसे बड़ी चीज थी धन प्राप्ति, जो हर चीज हर समय लगती है, वो बहुत विशाल रूप से प्रभावित हुई थी। और विशाल प्रोजेक्ट जैसे टीओबीपी अति विलंब हो गया उसमें टीओबीपी में। और श्रील भक्ति चालू स्वामी महाराज का अचानक तिरोहन उनके मने हो गया। और ये सब सारे ना पूर्ति होने वाली हमारी हानियां हुई। भगवान श्री कृष्ण की असीम कृपा से और आपके शुभाशीर्वाद के प्रभाव से इस वर्ष हरे कृष्ण आंदोलन ने अद्भुत गति प्राप्त की है। वर्ष के शुरू में ही पुनरोद्धारित नंबर 1 उल्टा जंक्शन रोड आपके और श्री भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर के बीच प्रथम मिलन की पुण्य स्थली पर का उद्बोधन हुआ। मंदिर, सामूहिक प्रचार प्रसार और डेवलपमेंट प्रोजेक्ट में प्रगति हुई। इस्कॉन न्यूटाउन में श्री श्री निताई गौरों का अति मनमोहक विग्रह की स्थापना हुई और पटना मंदिर भी नए रूप में उद्बोधन हुआ। महोत्सव और अन्य उत्सवों में रथ यात्रा महोत्सव अन्य उत्सवों में भव्य विशाल रूप से पालन किया। और पूरी आशा है कि टीओबीपी जो हमारा है वो 2024 में उसका उद्बोधन हो जाएगा। आपकी एक बहुत गंभीर कामना थी कि भारत सरकार के उच्चतम स्तर पे माध्यम से भी कृष्णा भावनामृत का प्रसार और प्रचार हो। तो आप लाल बहादुर शास्त्री प्राइम मिनिस्टर से भी मिले थे। वर्तमान प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी आपके द्वारा शुभारंभ किया हुआ हरे कृष्ण आंदोलन का सहारा और सराहना करते रहते हैं, जिसका स्पष्टीकरण उन्होंने अपने लेटेस्ट मैसेज और अन्य मैसेजों में 8 अगस्त को मैसेज एक दिया था, उसमें उन्होंने उसमें कंफर्म किया है। भागवत गीता के श्लोक नंबर 3 अध्याय के 21 नंबर श्लोक का उन्होंने उच्चारण करते हुए यत यत आचरति श्रेष्ठता तत्तते जनहा, माने उन्होंने बोला, उच्चारण करते उन्होंने इस बात पर बड़ा जोर दिया कि महान लोग जो कुछ करते हैं, जो कुछ भी स्टैंडर्ड स्थापित करते हैं, समाज उनका अनुसरण करता है। अतः हमें श्री कृष्ण के अनगणित गुणों का, उच्च गुणों का निष्ठा से पालन करना चाहिए। फिर जो उन्होंने आगे कहा श्री नरेंद्र मोदी ने कि जन सेवा और जनार्दन सेवा को एक साथ लाने का श्रील प्रभुपाद जी का एक बहुत प्रभावशाली इंड्योरिंग विरासत है। इस्कॉन के कार्यक्रमों का हॉलमार्क है। राष्ट्र के उच्चतम स्तर पर यह एक बहुत ही उच्च कोटि का कदम है। हम सब आपके बहुत कृतज्ञ हैं कि हरे कृष्ण आंदोलन में आपने जो शुरू में इतना योगदान दिया है, वो हमने ये थोड़े से एक सारांश में एक छोटी सी 5 लाइन में लिखा है। तो मैं जरा बिजन थोड़ा बजे तो अच्छा रहेगा, है ना। थोड़ा संगीत के बिना दम नहीं आता। करताल भी थोड़ा हो जाए। हरे कृष्ण, आप लोग थोड़ा रिपीट करने की चेष्टा कीजिएगा। जय प्रभुपाद, जय श्रीला प्रभुपाद, जगत गुरु जय श्रीला प्रभुपाद। जय प्रभुपाद, जय श्रीला प्रभुपाद, जगत गुरु जय श्रीला प्रभुपाद। वचन गुरु के निभाने के लिए उठा लिया बीड़ा बाहर जाने के लिए। वचन गुरु के निभाने के लिए उठा लिया बीड़ा बाहर जाने के लिए। बांट दिया तूने कृष्ण नाम का प्रसाद, जय प्रभुपाद जय श्रीला प्रभुपाद। बांट दिया तूने कृष्ण नाम का प्रसाद, जय प्रभुपाद जय श्रीला प्रभुपाद। ज्ञान की गंगा को बहाया तूने, कृष्णा की भक्ति को जगाया तूने। ज्ञान की गंगा को बहाया तूने,
कृष्णा की भक्ति को बढ़ाया तूने। हे आपकी महिमा को सब करे याद, जय प्रभुपाद जय श्रील प्रभुपाद। आपकी महिमा को सब करे याद, जय प्रभुपाद जय श्रील प्रभुपाद। जगत गुरु जय श्रील प्रभुपाद, जय प्रभुपाद जय श्रील प्रभुपाद। जगत गुरु जय श्रील प्रभुपाद, जय प्रभुपाद जय श्रील प्रभुपाद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्रील प्रभुपाद, आप हमको मार्गदर्शन करते रहिए, आशीर्वाद देते रहिए, ताकि हम अपने अंतिम सांस, जीवन के अंतिम सांस तक कृष्णा हरे कृष्णा आंदोलन में लगे, कमिटेड रहें। उसको आपका दासानुदास अशोक इन द सर्विस ऑफ कृष्णा, अशोक कृष्ण दास, सर्कल सर्वेंट लीडर, और आवर काउंसलर इज हिज ग्रेस अनंत भगवान प्रभु। उनका बहुत धन्यवाद देते हैं, हमेशा गालिबात करते रहते हैं। हरे कृष्णा। हरि बोल। अब मैं हिज ग्रेस आनंद भगवान प्रभु से निवेदन करता हूं कि कृपया मंच पर आएं और अपनी ऑफरिंग प्रस्तुत करें, और इसके बाद हिज ग्रेस आनंद गौर सुंदर प्रभु तैयार रहें। नमो विष्णुपदाय कृष्णप्रस्थाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामी नामे नमस्ते सरस्वती देवी गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पश्चात। Prabhupada speaks in Chaitanya Charitamrita. He quotes from Siddhanta Saraswati's Thakur's commentary. He speaks about from the pastime of Gundicha Marjanam. The Prabhupada writes Lord Chaitanya, how he exhibits the cleaning of Gundicha, and Prabhupada writes that similarly the sadhakas have to clean their own hearts and try to bring Krishna within their own hearts. And Prabhupada writes an extensive commentary quoting from Bhaktisiddhanta Saraswati Thakur, wherein he speaks that how the sadhakas, their hearts are filled with different kind of conditionings and anarthas and weeds, which one has to diligently remove. And Prabhupada goes on to say that the weeds which are present in the heart, they look similar to Bhakti Lata Bij, and it's very difficult to identify for a normal conditioned soul, because the conditioned soul can't discriminate between Bhakti Lata Bij and the weeds which are there within the heart. So in this way, and the hearing and chanting which sadhaka does, instead of nourishing the Bhakti Lata Bij, it may so happen that it may nourish the weeds which are there within the heart. So it is duty of a conditioned soul to diligently work upon removing the weeds which are there within our hearts. In this way Prabhupada writes, and also he goes on to say that Lord Chaitanya, he becomes very happy, just like he became very happy with the devotees who who collected a lot of dust and grains and dust particles and accumulated them. Lord Chaitanya became very happy with them. He appreciated them, he encouraged them, and he showed
he showed that example to others also. So Prabhupada says that so such weeds have to be identified, and Lord Chaitanya becomes very happy when one diligently tries to remove them. So today, today on this auspicious appearance day of Srila Prabhupada, I make a prayer, I offer a prayer that since my heart is also filled with lots of weeds, and it's very difficult to identify those weeds as well. It's not per condition, so it's not possible. Therefore, we require the help of spiritual master, Prabhupada says, to be able to identify the weeds. So on this auspicious occasion of Vyas Puja Day of Prabhupada, I offer a prayer that I be able to identify the discrimination and also determination. To be able to identify the weeds is one thing, and to have the determination to be able to cut down the weeds is much more tougher thing. So I make this prayer that I'll be able to identify and also cut down. One of the weeds which is repeatedly spoken twice, the only quality which comes twice in Upadeshamrita is Asatsanga. Lord Chaitanya speaks about it in Chaitanya Charitamrita. He says in reference to this, Lord Chaitanya says, Nishkinchanasya Bhagavad Bhajanonmukasya Param Param Jigamishor Bhavasagarasya Sandarshinam Vishayinam Atayoshitam Cha Ahanta Hanta Vishabhakshanatopya Sadhu. Wherein he says that association of materialists is much more dangerous than drinking poison itself. So it's quite the association of non-devotees is so powerful that it is the root cause of all kinds of conditionings. So it's imperative, it's vital and essential that a sadhaka, also Lord Chaitanya says, asatsanga tyaga 𝐂𝐻𝐌𝐌𝐔𝐍. It's imperative and essential that a sadhaka has to give up satsanga. So while it is easy to say, but it is difficult to follow, still I would seek blessings of Prabhupada to be able to make a commitment on this auspicious appearance day of Prabhupada, that I endeavor to give up asatsanga and also to be able to identify the weeds and discriminate, what is Bhaktilata Bij and what are the weeds, and have the determination to be able to remove the weeds. Hare Krishna. Thank you very much. Srila Prabhupada ki jai. हरे। तो सभी भक्तों से विनम्र निवेदन है कि अपनी ऑफरिंग 3 मिनट तक रखें। हिज ग्रेस अनंत गौर सुंदर प्रभु और उनके बाद हिज ग्रेस महाराज प्रभु तैयार रहें। हरे कृष्ण। उमंगान्ति मंदस्य ज्ञानंदन शलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। नमो विष्णुपदाय कृष्णप्रेष्ठाभूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामी नाम्ने नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्यस्था। तो अपने ऑफरिंग प्रारंभ करने से पहले मैं प्रभुपाद को शब्द पढ़ना चाहता हूँ। ये भीष्मदेव के वाक्य हैं और प्रभुपाद ने बड़े सुंदरता से इसको लिखा हुआ है। Thereupon that man who spoke on different subjects with thousands of meanings, and who fought on thousands of battlefields and protected thousands of men, stopped speaking and, being completely freed from all bondage, withdrew his mind from everything else and fixed his wide open eyes upon the original personality of Godhead Sri Krishna, who stood before him four-handed, dressed in yellow garments that glittered and shined. तो ये भीष्मदेव के बारे में लिखा हुआ है। कैसे भीष्मदेव अभी 450 साल से ज़्यादा के हो गए थे
और वो व्यक्ति जिसने हजारों युद्ध लड़े थे, हजारों लोगों को सुरक्षा प्रदान की थी, हजारों उपदेश दिए थे, अब सब जगह से अपने चेतना को हटाकर सिर्फ कृष्ण में अपनी चेतना को लगाना चाह रहे थे। तो ये शब्द इसलिए मैंने बोले क्योंकि आज दोपहर में ही मैं प्रभुपाद का कन्वर्सेशन सुन रहा था। तो प्रभुपाद के लगभग आखिरी दिनों की बात चल रही थी, जहाँ पे भक्तिचारू महाराज वैद्यराज से बात कर रहे थे। तमाल कृष्ण महाराज भी वहाँ पे बैठे हुए थे और तमाल कृष्ण महाराज से वो इंग्लिश की ट्रांसलेशन बोले थे, आप इंग्लिश में ट्रांसलेट करिए। और आसपास जो भक्त लोग थे, क्योंकि हम लोग वॉशरूम में चला रहे थे, जो भी भक्त आ रहे थे सब बड़े ध्यान से सुन रहे थे उसको। तो ऐसा लग रहा था कि आज भी वही समस्या है, प्रभुपाद के आखिरी दिन है, सारे भक्त लोग एकदम गंभीर हो गए, गंभीरता से सुन रहे थे। तो उसको सुन के एक रियलाइजेशन आया कि संसार में चीजें बदलती रहती हैं, किंतु गुरु और कृष्ण से जो रिश्ता है वो कभी खत्म नहीं होता है। अभी भी लग रहा था, कभी प्रभुपाद को हमने देखा नहीं, तमाल कृष्ण महाराज को देखा नहीं, भक्तिचारू महाराज भी अब हमारे बीच में नहीं है, पर ऐसा लग रहा था कि सब लोग साथ में ही हैं। अभी मेरे को याद है 2002 में जब पहली बुक पुस्तक प्रभुपाद की मैंने पढ़ी थी, लाइफ कम्स फ्रॉम लाइफ, तो उसके बाद में आखिरी पेज नहीं पढ़ा था कि प्रभुपाद डिपार्ट हो गए। उसके बाद दूसरी बुक पढ़ी, साइंस ऑफ सेल्फ रियलाइजेशन, तो एक पत्र लिखा था बीवीटी को, प्रभुपाद को पत्र लिखा था और कुछ क्वेश्चन पूछे थे। बाद में पता चला कि प्रभुपाद बहुत पहले ही भगवत धाम जा चुके हैं। फिर 2002 में 2004 में तमाल कृष्ण महाराज के बहुत लेक्चर सुने थे। तो कृष्णा.com में उसमें बहुत सारे लेक्चर्स थे तमाल कृष्ण महाराज के। तो हमने सोचा तमाल कृष्ण महाराज को गुरु बनाएंगे, बाद में पहले वो भी डिपार्ट हो गए। फिर भक्तिचारू महाराज के बारे में आज मैं सोच रहा था, जैसे हमारे पीछे वाली जो ज़मीन है, महाराज जब यहाँ पे छत पे थे तो बड़े चिंतित थे कि ये ज़मीन हमको मिली नहीं, स्टेज के पीछे वाली ज़मीन, तो वो भी बीच में नहीं है। फिर भी ऐसा एहसास हो रहा था कि सब लोग भी साथ में ही हैं, वो आत्मीयता महसूस हो रही थी। तो भले संसार में चीज़ें बदलती रहती हैं, लोगों के कपड़ों के रंग बदलते रहते हैं, जो ऑडियंस में होते हैं वो स्टेज पे चले जाते हैं, जो स्टेज पे ऑडियंस में चले जाते हैं, चीज़ें एक्सचेंज हो जाती हैं, पदवियाँ बदलती रहती हैं, टेम्पल प्रेसिडेंट ऑर्डिनरी हो जाते हैं, ऑर्डिनरी लोग टेम्पल प्रेसिडेंट बन जाते हैं। तो सारी चीज़ें इतने बदलाव के बीच में एक चीज़ जो नहीं बदलती थी वो गुरु और कृष्ण के साथ जो रिश्ता है। तो प्रभुपाद हमेशा लेक्चर्स में हमने देखा कि वो बताते रहते हैं। उसके बाद मैं दूसरा लेक्चर सुन रहा था, तो उसमें भी कुछ भक्त लोग पॉलिटिकल सिचुएशन के बारे में बात कर रहे थे कि भारत में कितनी ब्यूरोक्रेसी है, उसकी वजह से भक्त लोग बहुत जगह लीगल चीज़ों को आगे नहीं बढ़ा पा रहे थे। तो प्रभुपाद वो सुन के बोलते हैं, कहते क्या वो लोग हमेशा जिंदा रहने वाले हैं, वो भी तो मरेंगे ना, दे विल ऑल्सो डाई। कर सब लोग मरने वाले हैं, कर इसलिए इन सब चीज़ों को सहन करते हुए हमको हरे कृष्ण नाम का जप करना चाहिए और कृष्ण के साथ जो अपना संबंध है उसको और ज़्यादा सुदृढ़ बनाना चाहिए। तो इतने सारे टर्मोइल्स आते रहेंगे, बदलाव आते रहेंगे, लेकिन गुरु और जो कृष्ण के साथ रिश्ता है उसको बढ़ाते रहना चाहिए। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट शिक्षा है, खासकर आज बदलाव के माहौल में। पॉलिटिकल सिचुएशन बदल रही है, चीज़ें बदल रही हैं, भक्तों के बीच में भी कोई भक्त आते हैं, कोई जा रहे हैं, कुछ लोग डिपार्ट हो रहे हैं। कोरोना काल में बहुत सारे भक्त अपना भगवत धाम चले गए। तो मेरी प्रभुपाद से यही प्रार्थना है कि ये जो प्रिंसिपल है गुरु और कृष्ण के साथ अपना संबंध और सुदृढ़ बनाने का, ये हमेशा मैं जीवन भर ध्यान रखूं और उस पथ पर आगे चलता रहूं। गुरु श्री प्रभुपाद की। हरे कृष्णा। हिज ग्रेस महाराज प्रभु के बाद हिज ग्रेस अमर किशोर प्रभु तैयार हैं। Respected Srila Prabhupada, all glories to you, all glories to Sri Guru and Gauranga. Recently I had opportunity to stay in your center in Stockholm for about 3 weeks.
There I visited your BBT for Europe and a farm community based on agriculture and cows. In my baby efforts to preach, I realized the mountainous difficulties you faced in preaching in the West. I had some glimpses of how people think they are happy with material arrangements in the West. I also felt fortunate simultaneously that by your divine mercy, I could not be part of the chase for illusory happiness. It was my childhood dream to live in West. It became nightmare when I came in touch with your followers because I had great fear I would lose my good fortune if I ventured to West. But I find myself now fortunate that I am now protected of the infatuation whenever I took shelter of your words. I also had opportunity to appreciate the devotees there who have been serving you in multifarious ways in tough conditions. They are the souls who live like lotuses in the mud of illusion while serving you by your divine mercy. My appreciation for you also enhanced with this visit, as I could have some idea what you must have been and what you must have done to penetrate illusions there. Your name in history goes in golden letters as you have done an unprecedented service to Lord Chaitanya Dev. I wish I could bow down to you with deeper reverence and love every year on your Vyas Puja. Your servant Maharaj Das. Hari Bol. Thank you very much, Prabhuji. So now I request Amar Kishore Prabhu, and after that Nimai Anand Prabhu may please be ready. Hare Krishna. Namam Vishnupadaya Krishna Prishtaya Bhutale Srimate Bhakti Vedanta Swamin iti namane Namaste Saraswati Deve Gauravani Pracharine Nirvishesha Shunyavadi Paschatya Deshatarine. Dear Srila Prabhupada, please accept my most humble obeisances at your lotus feet. Recently, while I was reading your purports to first canto 5th chapter 34th verse of Srimad Bhagavatam, I was deeply touched by the points you had mentioned. One has to first of all, I'm just repeating the purport, one has to first of all seek the association of pure devotees who not only are learned in the Vedanta but are self-realized souls and unalloyed devotees of Lord Sri Krishna, the personality of Godhead. In that association, the neophyte devotee must render loving service physically and mentally without reservation. This service attitude will induce the great souls to be more favorable in bestowing their mercy, which injects the neophyte with all the transcendental qualities of the pure devotees. Gradually, this is developed into a strong attachment to hearing the transcendental pastimes of the Lord, which makes him able to catch up the constitutional position of the gross and subtle bodies, and beyond them the knowledge of pure soul, and his eternal relationship with the Supreme Soul, the personality of Godhead. After the relation is ascertained by establishment of eternal relation, pure devotional service to the Lord begins gradually developing into perfect knowledge of the personality of Godhead, beyond the purview of impersonal Brahman and localized Paramatma. By such Purushottam Yoga, as it is stated in Bhagavad Gita, one is made perfect even during the present corporeal existence, and one exhibits all the good qualities of the Lord to the highest percentage. Such is the gradual development by the association of pure devotees. The purport ends here. Here you mentioned some of the most subtle principles of bhakti. When followed, can elevate even a neophyte devotee to the highest stage of devotional service, love for the Supreme Lord Krishna. Especially the point that when a neophyte devotee renders loving service physically and mentally without reservation, will induce the great souls to be more favorable in bestowing their mercy, which injects the neophyte with all transcendental qualities of pure devotees. This was very striking for me. I was wondering, how will we, conditioned souls trapped by the influence of Maya through the three modes of material nature and covered over by innumerable anarthas, ever know or understand and appreciate these finer aspects of bhakti if we didn't have
your Bhaktivedanta purports. The great treasures of the scriptures would have been, which are offered by the mercy of Lord and Acharyas, would have remained encrypted to the whole world unless you had mercifully and tirelessly given your purports and commentaries decrypting the most difficult to understand concepts in most relevant and practical, easy to apply manner. These purports are like the perfect navigation routes in this dangerous and complex material world filled with innumerable pitfalls at every step to safely and successfully reach the shores of the spiritual world. Also, just having these purports would not have been fully effective unless we had living examples of sincere surrendered devotees whose lives are emulations of your teachings and purports. By your mercy, we have received this association, and in such association, this enables us to truly understand and appreciate your purports and inspires us to apply in our lives. When one disciple asked you, how can we repay the debt for the gift of devotional service you have given to us, you replied, you can never repay this debt. Yes, Srila Prabhupada, we can never repay this debt. We can only be grateful for what you have given us and reciprocate in some insignificant manner by living by your instructions and assisting your mission to our little capacity lifelong. In another instance, when you were asked by a disciple, Prabhupada, what is our qualification that we, though being at the lowest stretcher of life, absorbed in sense gratification, being the slaves of mind and senses, are offered the highest gift of pure devotional service to Lord Krishna? You replied, you didn't have any qualification. I made your qualification. Yes, Srila Prabhupada, unless you had appeared and saved all of us, there wouldn't have been any hope for all of us. We would have been rotting in this ugly dungeon of this metal world life after life. Recently, a war had broken out between Russia and Ukraine owing to some political conflicts. And most of the people in Ukraine are in a very sorry state of life, devoid of basic necessities. Many have been already killed as a consequence of this war. But ISKCON devotees have been doing their best to provide help by distributing prasadam. Even in such a chaotic situation, devotees are absorbed in devotional service and doing their best part in making the situation better. I was wondering, Krishna consciousness is so wonderful that even in the greatest provoking situations, a devotee can remain equipoised and fearlessly continue with his service to the entire humanity. Also, because you established Krishna consciousness movement, this planet is saved from the Third World War. Now we are able to appreciate your statement. You had mentioned this Krishna consciousness movement will go down in history for saving the world at the most dangerous moment. One who follows your teachings can joyfully be absorbed in loving devotional service, though living in the midst of the blazing forest fire of material existence. Thank you, dear Prabhupada, for saving this world, and thank you so much for saving me. My only prayer to you on this appearance day is to offer me the necessary strength and willingness to live by and carry out your divine instructions wholeheartedly lifelong. In a way, it will be pleasing to you. Your insignificant servant, Amar Kishore Das. Hare Krishna. हरि बोल। तो अब मैं निमायानंद प्रभु से निवेदन करता हूँ, उसके बाद अरूप प्रभु तैयार रहें और सभी भक्तों से निवेदन है कि अपनी ऑफरिंग्स को 3 मिनट तक रखने का प्रयास करें। हरे कृष्ण। नमो ओम विष्णुपदाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामने नमस्ते सरस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। O the most merciful purifier of the most fallen, my only hope, dear Srila Prabhupada. Thank you, Srila Prabhupada, for showing us by your example, with your every thought, word, action, followers, and history of Krishna consciousness movement. In truth, purity is the force. No one believed that it is actually possible to spread Krishna consciousness all over the world. It seemed just like a nice poetry before you appeared in this world. But you had firm faith in the words of previous acharyas. You had full conviction that anyone who just repeated the message of Parampara with firm faith in the words of the Supreme Lord and previous acharyas will make that impact.
with that purity of the purpose, with complete humble heart, you left from Calcutta on 13th August 1965, and rest is history in the golden pages of the world. As we reflect back today to think and feel how you did it, we remember your emphasis, purity is the force. Thank you, Srila Prabhupada, for showing us by your example, with your every thought, word, action followers, in truth, that purity is the force. You never took the credit of such a revolution you created in the consciousness of thousands of people. How they all changed completely appears miracle. You did it by your purity. You created qualification for all, and you gave all credit to your spiritual master. In preface to Bhagavad Gita as it is, you explained in Prabhupada's words, quote, some parents of devotees said that it is greatly fortunate for the Americans that I have started the Krishna consciousness movement in America. But actually, the original father of this movement is Lord Krishna himself. Since it was started a very long time ago, but is coming down to human society by disciplic succession. If I have any credit in this connection, it does not belong to me personally, but it is due to my eternal spiritual master, His Divine Grace, Om Vishnupad Brahmams Parivgrachacharya Ashtoshtattar Shri Srimad His Divine Grace Bhakti Siddhanta Saraswati Goswami Maharaj Prabhupada. If personally I have any credit in this matter, it is only that I have tried to present Bhagavad Gita as it is without any adulteration. Hence you instilled this pure mood in the hearts of all your followers. Now we all know for certain, as we see your example, Srila Prabhupada, that we have no credit in obtaining the results of our services. Till the time we align and repeat your message as it is, and allow you to come through us to transform others, this Krishna consciousness movement will expand. And when we have our own ideas and hence we block your message, we will fail in our attempts. Thank you, Srila Prabhupada, for teaching us what is that purity, so that we can live by your maxim, purity is the force. Thank you, Srila Prabhupada, for showing us by your example, with your every thought, word, action, followers in the history of Krishna consciousness movement. In truth, purity is the force. You very clearly and distinctly emphasized purity as our unique asset in the following letter. This is letter to Yogeshwar Das, 28th December 1971. Our unique asset is our purity. No one anywhere can match it. That will be noticed eventually and appreciated. As long as we do not diminish or neglect the highest standard of purity in performing our routine work, our pure standard is enough. Let us stand on that basis. End of the letter. There were so many opportunities to expand movement by some delusions, but you never let it happen and kept emphasizing on purity. In current times, when impure thoughts, words and actions are norm in the society, when even we devotees tend to justify what can be done, this is very degrading age of Kali Yuga. Your thoughts, words and emphasis on purity acts like thunderbolt, which smashes our misconceptions and which also gives light and hope in the darkness. And then we are situated back in proper understanding that purity is the force. And the movement will crumble if we deviate from this. You further explain in a lecture in Hyderabad in 1972. Quote from Srila Prabhupada's lecture. People say so much about me that I have done some wonderful thing. But I say that I am not a magician. I am not a magician. My only credit is that I am presenting Krishna as he is. That's all. I am not diluting Krishna. That is not my business. And therefore, because it is pure ghee, therefore everyone accepts. And if you place dalda mixing with ghee, some rascal thing, then nobody will accept. Therefore, so many went before me in Western countries and they presented adulterated, and there was not a single person became a Krishna Bhakta. Now by thousands they are becoming. Why?
because it is presented pure thing. Pure thing will be accepted everywhere. I give this example. In a Delhi, I have seen there is confectioner shop. He rigidly prepares in pure ghee all the sweetmeats. So you will find always hundreds of customers there, and they are by the side of that dalda manufacturer. It is not. People are still prepared to pay sufficiently if you give pure thing. So this Krishna consciousness movement is presenting Bhagavad Gita as it is. We have not manufactured anything. When I started this movement in America, some friend suggested that you are writing International Society for Krishna Consciousness. Why not make it God Consciousness? It will be accepted by everyone. But God is Krishna. There must be clearly stated Krishna Consciousness. I don't mind if nobody accepts it, but there must be Krishna. The lecture ended. You present Krishna consciousness as it is. Thus the Supreme Personality of Godhead can act, and persons respond and become devotees by your purity. Thank you, Srila Prabhupada, for showing us by your example, with your every thought, word, action, followers and history of Krishna consciousness movement. In truth, purity is the force. To ensure that purity, you always emphasized on training and boiling the milk, as you mentioned in letter to Hamsaduta, 22nd June 1972. Prabhupada's letter. Quote, now we have got so many students and so many temples, but I am fearful that if we expand too much in this way, that we shall become weakened and gradually the whole thing will become lost. Just like milk, we may thin it more and more with water for cheating the customer, but in the end it will cease to be any longer milk. Better to boil the milk now very vigorously and make it thick and sweet. That is the best process. So let us concentrate on training our devotees very thoroughly in the knowledge of Krishna consciousness from our books, from tapes, by discussing always, and in so many ways instruct them in right proposition. Letter end. You always wanted your followers to be also first-class trained devotees, trained in presenting your teachings purely, and in that you ensured that purity remains in this movement, and then the movement will expand rightly, else it will be diluted and finished. Thank you, Srila Prabhupada, for showing us by your example, with your every thought, word, action, followers and history of Krishna consciousness movement. In truth, purity is the force. Srila Prabhupada, at your divine birthplace, under guidance of your dear disciples, we are struggling to present your teachings so that we may make a monument to glorify you. This monument won't glorify you if it is simply gorgeous and unique in its architecture and aesthetics. Real unique feature, as you said, is purity, and hence it will become most gorgeous when all your followers here practiced and preached as you would want them to be. I beg at your feet to be able to be one of your insignificant instrument in this mission. Following your idea of training, we are here trying to train devotees in youth preaching, and we are also trying to train devotees in PDC who are newly joining ashram, and by your grace we may be able to start systematic Vaishnava training in Bengali and English for those who are staying nearby temple and wish to be trained. In that way, we wish to embark on preserving your mission by emphasizing on principle of purity is the force. Thank you, Srila Prabhupada, for showing us by your example, with your every thought, word, action, followers, and history of Krishna consciousness movement. In truth, purity is the force. Although I have spoken all this, but I am failing constantly in my own personal life to live by purity. So on this holy day of your appearance, dear Srila Prabhupada, I fall at your feet and I pray at your lotus feet that you are my only hope. Please accept me, don't reject me, although I am most fallen, unable to live up to the standards. Still, please accept me so that I may become a pure instrument in your mission. I may be able to serve your mission, to be able to represent you perfectly. Your highly unqualified and insignificant servant, Nimai Anandas. Srila Prabhupada ki jai.
हरी बोल। थैंक यू सो मच प्रभु जी। तो अब मैं अरूप प्रभु से निवेदन करता हूं कि वो अपनी ऑफरिंग प्रस्तुत करें और इसके बाद पूजा सिंह माता जी तैयार रहें। ओम नमो विष्णुपदाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामी नमने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। There is one verse in Bhagavad Gita in which Krishna says, Jat jat acharati sestas tat tat eve tarajana sayat pramanam kurute lokas tat anuvartate. As the leaders behave themselves in society, followers try to emulate them or try to follow their actions. In Srila Prabhupada's case, he did not set example. He became an example. That is the difference. That is the greatness of Srila Prabhupada. We may try to follow in his footsteps, but Srila Prabhupada became an example. In modern education society, the day you are admitted in school, you are taught right from the day one how to enjoy this world. Modern education system does not let you know what is the goal of life. And the first day you get in touch with any of the Srila Prabhupada's books, you immediately come to know the goal of life. That is the contribution of Prabhupada, because we do not understand till we read Srila Prabhupada's books the value of human form of life. Before reading Prabhupada's books, we are told the enjoyment is the only reason we exist, and enjoyment is the only reason we want to have in this world. But the day you get in touch with Srila Prabhupada's instructions through his books, you come to know what is the price of human form of life. That is the contribution Srila Prabhupada has made to all of us who have been so fortunate to get connected to this mission. One of the things that Srila Prabhupada has instructed, or rather told or wrote in his books extensively, and he has told this on numerous occasions in his books, that our constitutional position is to serve. No matter how we try to enjoy this world, this serving propensity will not go. So very funnily, he writes in many of his books that if you do not serve God, you have to serve dog. So on this auspicious occasion of his appearance day, I just like to thank Prabhupada for reminding us, the living entities, conditioned soul, our duty, our constitutional nature, through which we can derive what we are looking for, that is pleasure. We cannot enjoy and derive pleasure. Ultimately, those pleasures will end up in misery. And Srila Prabhupada only through his writings, through his instructions, repeatedly told us that only serving
the root of the tree, that is Krishna, we can derive pleasure. And this deriving pleasure is our constitutional position. Satchit Anand. We are made of bliss, and we can discover that bliss by serving the Lord, the root of our existence. In the beginning, when I told that the day you are admitted to school, you are taught A, B, C, D, E, these letters. But Prabhupada, if you read the instructions of Prabhupada, you will understand these A, B, C, Ds have changed in your life. A no longer means apple. A means association. You understand that, thanks to Srila Prabhupada. And through this A, B, C, D, E's, we can make our life really successful. How? On these A, B, C, D, E's, the contributions of Prabhupada is immense and unforgettable. Association, Prabhupada created institutions so that we can have associations. Not in India, throughout the world. And if you go to any country, for that matter, if you want to have sattvic food, if you want to have Vaishnava association, you will get it by Prabhupada's mercy. B for books, Prabhupada has written many volumes of books so that we can make our life successful. C for chanting, how he stressed on chanting for purification, for attaining our ultimate goal, to make our human form successful. So A, B, C, D's, I have found new meaning personally because of Prabhupada, and I have found that this A, B, C, D is have changed in meaning, especially personally for me. So on this auspicious occasion of appearance day of Srila Prabhupada, I would like to offer my deepest gratitude, obeisances to Srila Prabhupada for making me understand the value of human form of life. Thank you, Srila Prabhupada. Srila Prabhupada ki Jai. Thank you very much, Prabhu ji. So, इसके बाद मैं पूजा सिंह माता जी से निवेदन करता हूं कि वो मंच पर आए और अपनी ऑफरिंग दें। और सभी भक्तों से निवेदन है कि अपनी ऑफरिंग को 3 मिनट तक सीमित रखने का प्रयास करें। 2.5 मिनट पर हम मंच से एक इंडिकेशन देंगे करताल के माध्यम से, तो भक्त अपनी ऑफरिंग्स को लिमिट कर सकते हैं वहीं पे। हरे कृष्णा एवरीवन। सभी को दंडवत प्रणाम। श्रीला प्रभुपाद के व्यास पूजा के दिन मैंने एक छोटा सा पोएम लिखने का कोशिश किया है, एंड दिस पोएम बेसिकली डिस्क्राइब्स माय जर्नी विच मेड मी टू रियलाइज द इम्पोर्टेंस ऑफ श्रीला प्रभुपाद। नमो विष्णुपदाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामी निति नामिने नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। जब हुई थी आपकी कृपा पहली बार, बिन मांगे जब दिया था आपने कृष्ण प्रसाद, मैं बेवकूफ़ उसका मोल ना समझ पाई। भक्तों का संग तो खूब मिला पर मैं उनका मान ना रख पाई। जब देखना शुरू किया इस दुनिया को अपनी नज़र से, तो शुरू में तो सब रोशन रोशन था। अंधेरों से भी सामना हुआ मेरा, पर उस अंधेरे को रोशनी समझना सिर्फ बाहरी दिखावा था। लोगों की भीड़ से जब रूबरू हुई तो एहसास हुआ जो सामने दिखता वो मुखौटा, पर इनकी असलियत कुछ और है। मासूमियत का आखिरी रस भी निचोड़ ले, इस दुनिया की ये खासियत है। जब पाया खुद को अकेला खड़ा तो सदियों बाद आपका स्मरण हुआ। सच कहूँ तो आपका नाम भी मैं भूल चुकी थी।
पर छोड़ आई थी अपनी मर्जी से, उसी दहलीज पे सहारा मिला। ना होती अगर आपकी कृपा तो आज जहाँ हूँ वहाँ कभी ना होती। ना कराया होता आपने एहसास भक्तों के संग का तो आज आपको शुक्रिया नामा ना लिख रही होती। सुना है गलती करने पर सज़ा मिलती है, पर आपने तो सबसे अनमोल तोहफा दे दिया। मैंने तो बस माफ़ी मांगी थी, आपने तो गुरु का आश्रय भी दे दिया। फिर क्या था, गुरु की वाणी में आपकी शिक्षाएं सुनी, आपकी लिखी हुई किताबें भी पढ़ी, धाम यात्रा किया, सेवा का मौका भी मिला। बस चाहती हूँ चलता रहे ये सिलसिला यूं ही। प्रार्थना है बस इतनी आपसे, जो संसार बसाया है आपने उसका कण मात्र हिस्सा बनाए रखना। ज़्यादा कुछ कर पाऊँ इतनी काबिल तो नहीं, बस इस दूसरे मौके का मान रख पाऊँ, इतनी कृपा बनाए रखना। हरे कृष्णा। And I would like to thank my Shiksha Guru, His Grace Shri Govind Ghosh Prabhu Ji, for giving me this opportunity. Hari Bol. हरी बोल। तो अब मैं आशुतोष प्रभु से निवेदन करता हूँ कि अपनी ऑफरिंग प्रस्तुत करें और उसके बाद गौरांग स्मरण प्रभु तैयार रहें। रोहिणी सुतनिताई प्रभु तैयार रहें। हरे कृष्णा। माय डियर श्रीला प्रभुपाद जी, दंडवत प्रणाम। It's my greatest fortune that I have got this gift of Krishna consciousness. I have heard from the devotees about the struggle that you did to establish this movement, successively to heart attacks, seasickness, then staying at Bauri, which is unfit to live and unhygienic. In last year pandemic, many people were closed at home and have nothing to do and nowhere to go, so they were feeling totally depressed. It seems that practice of Krishna consciousness and its spreading will be at stake, but by the arrangement of the devotee, online classes and all the festivals, it was just an awesome experience. Fortunately, many people took it seriously and they had no option, but fortunately they took to the best option of Krishna consciousness, and Krishna got established in each and every home. At that time, when everything was topsy-turvy, I had this most precious gift of Krishna consciousness that was the only source of satisfaction for me. I am a very poor practitioner and very weak in Krishna consciousness. I am chanting only 16 rounds daily, trying with sincerity, reading your books which are perfect guidelines, and hearing lectures. I wish and pray that I could continue this lifelong in the association of devotees. As I have seen many devotees, they come to Krishna consciousness and they leave it completely. Also, I am trying to speak about this to a small group of students in our place of Aurangabad in a small capacity. I need your and devotees' blessings so that I can continue it for self and common benefit. Thank you very much. Hare Krishna. हरी बोल। थैंक यू प्रभु जी। अब मैं रोहिणी सुतनिताई प्रभु से निवेदन करता हूँ कि वह अपनी ऑफरिंग प्रस्तुत करें। इसके बाद ज्योतिर्मय प्रभु तैयार रहें और उसके बाद हरि प्रसाद प्रभु। हरे कृष्णा। नमः विष्णुपादाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिनीति नामिने नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी
পাশ্চাত্য দেশ তারিণী। আজকে আমরা এমন একজন ভারতবর্ষ তথা পৃথিবীর বৈদিক শাস্ত্রে যিনি সমস্ত পৃথিবীকে আন্দোলিত করেছিলেন, সেই প্রভুপাদের আবির্ভাব তিথি উপলক্ষে আমরা শুভ অনুষ্ঠান উদযাপন করছি। তিনি ছোট বয়স থেকেই ভক্তি জীবনের সঙ্গে তার ভীষণভাবে ওতপ্রোতভাবে জড়িয়েছিলেন। তার বাবা রজনীকান্ত দে ছিলেন একজন অত্যন্ত ধর্মপরায়ণ ব্যক্তি। সাধু বৈষ্ণব সম্প্রদায়কে তিনি ভীষণভাবে সেবা করতেন এবং তাদেরকে বাড়িতে নিয়ে আসতেন আর তাদেরকে অনুরোধ করতেন, আপনারা আমার ছেলেটাকে একটু আশীর্বাদ করুন যাতে কৃষ্ণে ভক্তি আসে। তারাও আশীর্বাদ করে গেছেন। আর প্রভুপাদ ছিলেন জন্ম থেকেই তিনি ব্রিলিয়েন্ট স্টুডেন্ট। ইংরাজি ভাষাতে তার প্রচণ্ড দখল, জলের মতো ইংরাজি কথাবার্তা বলতে পারতেন। একসময় ভক্তি সিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী ঠাকুরের সঙ্গে তার আলাপ হয়। সাক্ষাৎকারে তিনি বুঝতে পারেন সুদূর পাশ্চাত্য দেশে যত দেশ আছে সেখানে গিয়ে ভগবান শ্রীকৃষ্ণের বাণী প্রকাশ করুন আর বুঝিয়ে দিন সারা পৃথিবীকে যে একমাত্র ভগবান কৃষ্ণ, তিনি হচ্ছেন ঈশ্বর ভগবান, আর কেউ ভগবান নন। এটা শাস্ত্র সম্মতভাবে সারা বিশ্বকে জানিয়ে দিন। প্রভুপাদ 70 বছর বয়সে আমেরিকা যাত্রা করলেন আর সেখানে গিয়ে যখন ঘুরছেন, পয়সা নেই, অসুবিধার মধ্যে একটা গির্জার সামনে বসে আর আপন মনে করতাল বাজিয়ে গান করতে আরম্ভ করলেন, হরে কৃষ্ণ নাম। এই হরে কৃষ্ণ নাম যখন তিনি করছিলেন, আর তখন কিছু কিছু হিপি ছেলেমেয়েরা তার প্রতি আকর্ষিত হয় এবং তারাও সেই ভজন শুনতে থাকে আর প্রভুর সঙ্গে গলা মিলিয়ে বলতে থাকে, হরে কৃষ্ণ 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 হরে হরে, হরে রাম 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 হরে হরে। ভজন শেষ হতে না হতেই দেখা গেল ওই সমস্ত হিপি যারা জীবনকে উচ্ছৃঙ্খলভাবে যাপন করে, বাড়িতে যায় না, মদ তৃষ্ণা পেলে মদ খেয়ে থাকে, সেই সমস্ত ছেলে মেয়েদের বাবারা এসে বলছে, কি ব্যাপার সাধু বাবা, আপনি কি জাদু জানেন? আমার ছেলে মেয়েদেরকে কি জাদু দিয়ে দেখিয়েছেন যে তারা আজকে এখানে আপনার সঙ্গে ভগবানের নাম করছে, আপনি যা বলছেন তাই বলছেন, এ কি করে সম্ভব হয়েছে? উত্তরে বললেন যে আমি ওদের জ্ঞান চক্ষু খুলে দিয়েছি। আপনারা তো ভগবানের সম্বন্ধে অবগত নন, আপনারা ভাবেন যে যিশু, তা যিশু যদি আপনাদের ভগবান হয়, তাকে যখন ক্রুশবিদ্ধ করা হয়েছিল তা তিনি বলেছিলেন, হে পরমেশ্বর ভগবান, এরা জানে না, হে ঈশ্বর জানে না এ কি অন্যায় করছে। তাহলে তিনি ঈশ্বর নয়? তাহলে ঈশ্বরকে জানে যখন আবেদন করছেন যে এদেরকে ক্ষমা করা হোক, তাহলে ঈশ্বর তিনি নন? তখন ওরা বুঝতে পারলো তাই তো, যিশু তার জীবনে তো এই কথাই বলেছেন। তো তারপর তাদের সম্বিত ফেরে এবং আস্তে আস্তে দেখা যায় ওই সমস্ত ভক্ত ইয়ং ছেলেমেয়েরা আর ওই প্রভুর খুব অনুগত হয়ে যান এবং আস্তে আস্তে সেখানে তিনি নাম গান করতে থাকেন, প্রচার করতে থাকেন। ওই ছাত্রদের বাবা মা ধনিক, বিরাট ধনিক, তারা দেখলেন যে তাহলে প্রভুকে কেন গাছতলায় থাকবেন, তার জন্য একটু আশ্রয় দরকার,
তারপর মন্দির তৈরি হয়ে গেল, আর তারপর সেখানে তিনি তৈরি করলেন ইস্কন, কৃষ্ণ ভাবনামৃত সংঘ। তা সেই নিউ ইয়র্কের শহরে সেটা তৈরি করেছিলেন। তারপর দীর্ঘদিন ধরে তিনি সেখানে প্রচার করেন। এই প্রচারে আকৃষ্ট হয়ে ওইখানকার মানুষরা তারা বললেন, প্রভু আপনি আসুন আমাদের গ্রামে, আরেকজন বলছে আপনি আসুন আমাদের গ্রামে। এইভাবে বলতে বলতে চারিদিকে ছড়িয়ে গেল, আর ওই ভক্তরা প্রচার করতে আরম্ভ করলো, আর গুরুদেবের সান্নিধ্যে চলতে লাগলো। এইভাবে তিনি সারা বিশ্বকে তিনি জানিয়ে দিয়ে গেছেন যে ভগবান কৃষ্ণ এক, একম অদ্বিতীয়ম। তাই আমরা ভারতবাসীরা আজকে চিনতে পারি না, বুঝতে পারি না, আমরা তাকে সেভাবে আমরা স্মরণ করছি না, ভগবানকে আমরা সেভাবে দেখছি না। আজকে সেই বিদেশ থেকে, সেই শুরুর থেকে, সেখান থেকে সমস্ত পাশ্চাত্য দেশের মানুষরা, মহিলারা, তারা আজকে ভক্ত হয়ে মায়াপুরে গড়াগড়ি খায়। তারা ভগবানকে বুঝতে শিখেছে, তারা গৌরাঙ্গ মহাপ্রভুকে জানতে শিখেছেন যে তিনিই কলিযুগের অবতার, এবং সেখানে গিয়ে তারা কিভাবে জীবনযাপন করছে। অত সুন্দর, অত ধনী সম্প্রদায়ের মানুষ আজকে মাটিতে ধুলোতে মিশিয়ে গড়াগড়ি খাচ্ছে আর ভগবানের নাম করছেন। আমরা অধম। আপনাদের কাছে আমার একটাই আবেদন, আপনারা দয়া করে এই কৃষ্ণমুখী হন। আজকে বিশ্ব যেখানে চোখ খুলে গেছে, আপনারাও এই ভারতবাসী, এই পশ্চিমবঙ্গের অধিবাসী, আপনাদের কাছে আমার শেষ অনুরোধ, আপনারা একটু কৃষ্ণমুখী হওয়ার প্রচেষ্টা করুন। এখানে বড় কৃষ্ণ নিতাই গৌর মন্দিরে আপনারা আসবেন এবং এখানে এই মন্দিরের সঙ্গে যুক্ত হবেন। দেখবেন আস্তে আস্তে আপনাদের দেহে পরিবর্তন হবে এবং অদূর ভবিষ্যতে আপনারা কৃষ্ণ ভক্ত হবেন, এই আশা রেখে আমার বক্তব্য শেষ করছি। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। तो अभी हम अभिषेक, श्रील प्रभुपाद का अभिषेक करेंगे। तो सभी डिवोटीज से अनुरोध है कि कीर्तन में पार्टिसिपेट करें और हृदय से भगवान के नाम का जप करें और कीर्तन करें। भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामी निति नामिने नमः। विष्णुपादाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिन्निति नामिने नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषा शून्यवादी पाश्चात्यशतारिणे नमस्ते सरस्वती देवी गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे
Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna
राम हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। हरे कृष्णा
कृष्णा हरे 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 राम 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 हरे हरे Hare Krishna कृष्णा कृष्णा हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम